हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस क्लियर? क्या मेरा आवाज आ रहा है? एंड इज माय वीडियो क्लियर? Today I'll be playing the mega team battle. Which team should I play for? I think I'll play for the House Discord server or the Moon Club. Wait, Moon Club is too low in the ranking. I think I'll play for CM King Crusher's team this time. I'll get good opponents, hopefully. Strong opponents. Okay, so here is my first opponent, Maxime. सिंपल डच डिफेंस है ये. अब क्या करना चाहता है ये? लेट्स सी. नाइट आउटपोस्ट पे बैठ गया जैसा मेरे को चाहिए था. अब मेरा नाइट D7 पे आएगा, दूसरा इस सेंटर पे प्रेशर डालेगा. आई टेक. अब ये पॉन चला जाएगा. प्रॉब्लम ये है, ये ओवर पुश करने का प्रॉब्लम होता है. वो नाइट से मारेगा, हम नाइट से मारेगा और अल्टीमेटली मेरे को ये पॉन मिल जाएगा. सो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है. वो ये भी खेल देगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये मारेगा फिर ये मार देगा, नो डिफरेंस. अब मेरा टारगेट है ये पॉन. वो मोस्ट प्रोबेबली F4 खेलने वाला है. क्वीन B6 खेल रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है F4 खेलने के लिए. और नाइट इधर खेलेगा मोस्टली. फिर हम बिशप D7 और C5 भी पुश कर सकते हैं. Now I'll go. Okay, he wants to play knight C5.
प्ले क्वीन c7, मेरे को ये पॉन चाहिए। b6 आई थिंक प्रिवेंटिंग एनी मूव ऑफ नाइट c5, पर नाइट d4 एक प्रॉब्लम है। अगर नाइट d4 खेलता आई थिंक आई जस्ट इफ आई प्ले c5 देन अगेन नाइट b5 is there and he will get his knight to the outpost of d6. But now I think I can play c5, but again the problem is knight d4. I'll have to play a6 or something like that, or something like bishop a6 is also bishop a6, then e6 pawn is loose. Now I can play bishop a6, rook moves, and then I'll play queen f7. Queen f7. He's offering a draw, but I don't think I'll accept it. My position is much better. Why would I go for a draw? Queen here. Now my rook will come to f3. First rook f7, then doubling the rooks. He can play rook a1, then I can double other rooks on a5 also. हाँ, तो क्या करेगा ये? Could anyone confirm if my stream is lagging or not? I think I'll go rook double on the e5 and then a move like bishop c4. अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है, अब हम ये मूव खेल सकते हैं बिशप टू f1. If he captures, then it's a checkmate on g2, and if he captures my bishop, I'll get the rook. अच्छा, अब हम क्वीन को क्वीन साइड में लेके जाएगा, मोर एक्टिव. क्वीन इज मोर एक्टिव ऑन द क्वीन साइड. अब क्वीन इधर, थिंक आई जस्ट ऑफर अ क्वीन ट्रेड. फिर वो क्या करेगा? एक बार क्वीन एक्सचेंज हो गया फिर तो ऐसे ही विन ही है. वैसे तो बिना क्वीन एक्सचेंज के भी विन ही था, बट इट इज मोर सिंपल. जब भी तुम्हारा पीस आपको कुछ हो, यू शुड जस्ट गो फॉर अ क्वीन एक्सचेंज. क्वीन c4. आई थिंक अभी तो क्वीन d2 जा सकता है, पर कितना स्ट्रगल करेगा ये. अब हम पास पॉन भी निकाल सकते हैं. प्रॉब्लम ये एट द एंड ऑफ द डे मारने के बाद क्वीन कैप्चर्स के बाद दिस पीस विल बी हैंगिंग, और इस मूव के बाद आई कैन प्ले क्वीन हियर. धीरे धीरे एंटर कर रहा है उसके कैंप में. अब ये मूव अच्छा है कि नहीं वो मुझे नहीं लगता अच्छा है. हम बस एक्सचेंज कर लेगा. पॉन पुश भी कर सकता है, रुक इधर भी खेल सकता है. दो ऑप्शंस है. आई थिंक हम बस रुक एक्सचेंज करता है. एक बार अगर रुक एक्सचेंज हो गया तो गेम और सिंपल हो जाएगा. ऑल्दो एक पॉन चला गया बट गेम सिंपल हो गया. मेरे को भी एक पॉन मिल गया. वो ये पॉन मारेगा तो हम इस पॉन के पीछे पड़ जाएगा, या फिर ये पॉन प्रमोट भी करने के लिए जा सकता है. सिंपल. Why should I go for the complexities? रुक इधर से पॉन पुश करेगा, वो नाइट से ब्लॉक कर देगा प्रोबेबली. हम रुक किंग इधर लेके आ जाएगा. किंग इधर, and then this pawn is a goner. अच्छा, रुक इधर,
रुक टेक्स, बस फोर्क ना हो जाए कहीं पे, बस ये टेंशन रहता है नाइट के साथ एंड में कि फोर्क्स के लिए ध्यान देना होता है। हम सिंपली मार ही देता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों करना। ये चेक हुकिंग से मारेगा तो ये चला जाएगा, अब हम मार देते हैं सिंपली, पास पॉन है, अब आराम से जीत जाएगा। क्या रैंक है अभी? 302, पहला गेम तो जीता है। और सीएम किंग क्रशर का टीम का क्या रैंक है? 6th पोजीशन। जान दीन हो फ्रॉम डार्क ऑन टीम्स, थिंक हम ये गेम बर्सैक कर सकता है। E4 आई गो फॉर स्कैंडिनेवियन, पॉन कैप्चर्स, जल्दी खेलना होगा। पिन क्वीन इधर, कैसल, अगर वो H3 खेलेगा, ये ब्लंडर हो गया यार। नहीं, नाइट कैप्चर्स, बिशप कैप्चर्स, नाइट कैप्चर्स, बिशप कैप्चर्स, वो तो देखा भी नहीं रखता, बट ठीक है, हम एक्सचेंज नहीं करेगा। वो H3 खेलेगा, हम उसको प्रोवोक कर रहा है, मेरे को H5 खेलना है, हम ये पीस सैक कर देगा। अब H5, एक्चुअली हम ये मार भी सकते हैं, हम सिंपली मार ही देते हैं। अब अगर हम क्वीन इधर खेलेगा तो कैसे प्लान कर रहा है इस पॉन को बचाने का? नाइट H4 खेलेगा, हम ये क्वीन से मार देगा, ये मूव में तो सिंपली हम ये मार देगा। Now what? If I move like this, then I can simply play bishop H2 check and queen G2 checkmate. Okay, what about this then? कोई फोर्स मीट है क्या? हाँ है, बिशप G2 चेक, किंग कैप्चर्स, फिर नाइट इधर आएगा, फिर एक और बिशप सैक्रिफाइस, फिर क्वीन चेक और क्वीन चेकमेट। ऑल्दो एक दो मूव ज्यादा हो जाएगा, बट एटलीस्ट फोर्स मीट है। अच्छा, वो किंग G1 वापस जा सकता है, सभी को रिजेक्ट कर देगा, और क्वीन बिशप तीनों एक लाइन में। वाओ, it would be pretty interesting if he does that, and he does that exactly. ठीक है, मत मारो कुछ भी, हम खेलेगा बिशप वापस। It's very rare to see a position like this where the opponent is not accepting any sacrifice. 120th rank, still सीएम किंग क्रशर का टीम अभी भी बहुत दूर है। यार लीचेस में स्ट्रीम दिखा नहीं रहा है कि आई एम स्ट्रीमिंग। BB Eggle from Chess Architect, वर्सेक करे या ना करे, इसमें रिस्क है क्योंकि मेरा इंक्रीमेंट भी चला जाएगा, so I don't want to take a risk unless opponent वर्सेक करता है, थोड़ा रिस्की गेम है। So max lang attack territory, we are in the max lang attack territory, the main line is d5,
फिर then pawn captures, rook check. This is how the main line goes. कुछ भी और वो खेलेगा then it is a mistake. d5 is the only move in this position. अब देखो प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे आ गया है, अब नाइट को कौन बचाएगा? There is no way to save this knight. If he pushes d5, I'll just capture. And now if he plays f5, then knight g5 is there. All in all, it is a very annoying position to play in. And he cannot even castle it because my bishop is eyeing in this square. A move like this now, I'll just play knight g5 and pressurize this knight here. This f7 pawn is hanging. Pretty much a miserable position to play. अब वो ये खेल रहा है, हम सिंपली मार देते हैं. Probably pawn captures or maybe bishop. अच्छा, we'll go with the queen. So simply make a developing move दे रहा है, bishop f4. So move like queen g6, then knight d2, developing my knight. फिर मैं बिशप d3 करके कुछ स्पिनिंग आइडियाज, मतलब डिस्काउंट अटैक आइडियाज भी आ सकते हैं. अब बिशप इधर खेलता है तो एक और प्रॉब्लम है कि नाइट b4 आएगा. पहले एक बार a3 खेल लेता, ऑल्दो कुछ ज्यादा ही पैसिव हो रहा है, पैसिव मतलब ओपोनेंट के मूव्स पे खेल रहा है प्रोफिलैक्टिकली, बट ठीक है. अब बिशप इधर d3, ये क्या है? ये मेरे को क्वीन दान दे रहा है. थैंक यू फॉर द गिफ्ट. आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट द गिफ्ट. सेकंड पोजीशन एंड सीएम किंग क्रशर का टीम सेकंड आ गया. चलो अच्छा है, कंपीट हो रहा है, कंपटीशन में है. अच्छा, अभी एक एफएम के साथ मैच है, मिस्टर स्पार्टन लायन. मजा आएगा. लेट्स सी. आई विल गो फॉर द स्कैंडिनेवियन मॉडर्न अगेन. बिशप g4, बिशप e2 खेलेगा, क्वीन e2 मारेगा शायद, नहीं, नाइट e2, knight c6, queen captures, queen इधर, फिर queen side castling. डिसेंट पोजीशन मिला ओपनिंग के बाद. e5, अब मेरे को h5 h4 खेलना है. h5, अच्छा h4, b5 पे हम सोच रहे नाइट d4 खेले या नाइट को गेम पे रख के रखिए. अच्छा, वो ये खेल रहा है. पहले हम एक बिशप e7 खेल देता है फिर. हाँ, b5, then knight b4, bishop captures and rook captures. He is offering a queen trade. I think I'll accept it. I'll go g6. I want to play f5. If he plays g5 himself, I'll just go knight d4. He cannot take because this pawn will be hanging. So what is he planning to do? f4. Interesting. Pretty interesting.
थिंक बिशप f6 खेल सकता है। बिशप ऑन कैप्चर्स भी मार सकता है। अगर रुक कैप्चर्स हम बिशप g4 खेलते, थिंक हम मारेगा। इसका एक डबल पॉन का प्रॉब्लम है, ऑल्दो इसका f5 खुल जाएगा और वो बिशप से मारा है। नाइट d4 एक मूव खेल के रख सकता है। c2 पॉन पे टारगेट है और फ्यूचर में नाइट e2 चेक्स का बहुत बड़ा थ्रेट है। अच्छा, नाइट कैप्चर्स मारे तो क्या होगा? बिशप कैप्चर्स h8, नाइट कैप्चर्स c1, then what? Rook captures f7 probably. Honestly बिशप देने का मन नहीं है मेरे को। थिंक हम रुक f8 खेलेगा, पर रुक f8 में भी एक प्रॉब्लम है, बिशप g7 पे आ जाएगा। तो हम रुक h7 खेल सकते हैं। फास्ट खेलना होगा। What the heck? क्या ब्लेंडर हो रहा है? बिशप इधर खेल रहा था, यहाँ मिसक्लिक हो गया। बाक, अच्छा वो भी नहीं देखा। थैंक गॉड। Think I should just resign. Okay, I'll be back in a moment.
Hello guys, so I'm back. Now it is finally showing on lichess, and I'll continue my games. And okay, Thomas is not here. Thomas, if you are here, then I'll play against you later. I'm playing against Ada Red from team VK. Play e4. I don't particularly like this line. This is a bit weird. Even I play a weird line with c3, and I go for the Smith-Morra gambit. Let's see. And now c3, going for the delayed Smith-Morra gambit. Bishop c4. Probably will go for bishop g7. I can go h3 or kingside castling. दोनों ही अच्छा लग रहा है. Currently I am 8 in my team with 9 points. Knight to d7. I wonder if I can sacrifice my bishop here, or it will be too ambitious. I think I'll wait. I want him to play bishop g7. If he plays bishop g7, then I can sacrifice my bishop. King captures, knight g5 check, king moves, and then knight to g6. And then taking up the bishop here. ये बहुत अच्छा है. And if he does not play bishop g7, he'll play e6. Then I can maybe go for a move like bishop g5, waiting for him to play bishop g7, then knight b5 and pressurizing this d6 pawn. तो बहुत pressure है इसके position में. Knight d7 was a bad move. Knight d7 की जगह bishop g7 खेलना चाहिए था और king side castling कर लेना चाहिए था. ये क्या मूव है? Can I play e5 here? क्या होगा अगर मैं e5 खेलूं इस पोजीशन में? If I play e5, knight captures c4, pawn captures f6. He cannot recapture my pawn because queen e4 check, and I'll be getting his knight. And if he captures my pawn, bishop captures f7, and I get the queen. तो बहुत प्रॉब्लम्स है इस पोजीशन में. I'll play e5. Let's see what he does. Now pawn captures. Now his position is already very passive. He has to be a bit faster. I don't think that this move knight g5 works, bishop e6 works, because I have knight d4 and knight g4, again pressurizing this knight here. And this f6 pawn is beautifully placed. But I wonder if I go for knight g4 or knight g4. कहाँ जाए?
think I'll go for, wait, knight d4. Although honestly अभी तक मेरे को डिफरेंस समझ में नहीं आया नाइट g4 और नाइट d4 के बीच में. Now knight captures. He has to capture with a pawn. Yeah. I want to play a move like rook e1, pawn captures, queen d5, but then knight e5 is there. अच्छा एक और मूव है, pawn captures, bishop captures, queen here attacking the rook and the knight. Now queen here, if he plays a move like knight e5 defending both, I'll play f4. I think I will get the piece. Piece मिल जाएगा guys, piece मिल जाएगा. Oh नहीं, knight f7 भी है, वो मिस कर गया. But ठीक है, एटलीस्ट पोजीशन तो काफी बेटर है. आई थिंक वो नाइट f7 अभी तक देखा नहीं है, वरना नाइट f7 देखने के बाद तो वही इमीडिएटली दिमाग में आता है. हाँ वो मिस कर गया नाइट. अच्छा वो देखा था पर वो और भी बेटर मूव देखने का कोशिश करता, बट मेरे को नहीं लगता ये बेटर है. भी क्वीन इधर आ जाएगा, फिर नाइट g4 एक मूव है, और फिर मेरे पास नाइट d5 है. अब नाइट d5 पे क्या करेगा वो? थ्रेट है नाइट f6 और हम नाइट b6 भी मार सकता है. फिर एक f5 भी मूव आ रहा है, बहुत सारा थ्रेट्स हो जा रहा है. अब रुक कैप्चर, वो कुछ भी नहीं मार पा रहा है. नाइट चेक और फिर टेक्स. यहाँ पे पॉन, क्वीन इधर, बिशप इधर. आई वॉन्ट हिम टू प्ले दिस, नहीं खेला. ठीक है तो रुक इधर. अब इतना प्रेशर डाल दिया है. तो लॉस ही हो गया इसका, पर ये फिर भी खेलेगा. चलो रिजाइन तो किया एटलीस्ट. हेलो जोल्तान, जोल्तान पैथो. इन विच टीम आर यू प्लेइंग जोल्तान? Okay, I'm playing a Grandmaster. It will be fun. Let's see. Grandmaster Evgene. He's going for the Scandinavian. Knight e5. I think I want to try Queen f3. Let's see what he does. I am threatening knight captures f7. If he captures with the king, I'll capture with the queen and I'll capture this bishop. Yeah, so he has to be careful in this position.
I will go for, I think this works, h4 with the idea of h5. He has a move like queen d4. I can see that. But okay, this move. I think I'll just capture h5. This pawn is hanging. I think I'll go g3, although it is a bit passive, but I don't see any other option. This bishop will be gone. d4 and then bishop g5. Simple developing moves. Although I am a bit sad that my attack is gone. Not much attacking options right now. But it's fine. I can still find an attack. Rook d3, rook a3. Okay, even he is going for an attack. So, I think I'm on an equal footing at the moment. Not that bad. Rook here. My idea is taking this pawn simply. If he plays a6, I can play rook here and then attacking this and this pawn. He is offering a rook trade. I think first I'll capture this pawn, move here and then accept the rook. Rook here, I want to play rook e5. Okay, rook e3. a3, just opening up my back rank just in case. Although I'm freeing up his double pawn also. But I will have move like rook c3 now. Queen check. We'll play queen here probably. Queen here, targeting this pawn. Now I just need to hold this position. Queen here. b4. c4. He's targeting this check. I think I can give away this check. Although it will be a bit risky,
I'm planning queen here, queen check, king here, queen captures, queen check. But his queen can come back. I don't think that I need to take this unnecessary risk. Or I can go for it. Queen check, I'll just go here. Let's see. I don't think that it's a risk. Because I just have this queen check, queen check, queen check, and that would be a draw. I don't think that he wants a draw. Now I have this check. Now b5. c6. Then what? He has this checks, but ultimately what will be the result of it? Just go here, here, because I'm threatening mate here. What is he supposed to do for that? I think he'll accept a draw now. He has no move. And I'll not give this pawn in a check if he's looking for that. I'll just move in a1 and b1 and it's a draw. Happy drawing against the grandmaster. Sigim BT S207. Okay, the elephant gambit. Just take. D4. Knight here. I want to break the position with f3. c4, and I now want to play d5. d5. Now queen here. I want my queen to go to g3. Queen g3. If I move like king h8, I will go bishop d6 and capture this f5 pawn. What was that? Why is he giving up his h6 pawn? I think I'll just take it. Bishop here. If queen g6, I go h4 and h5 then. Queen captures pawn. Think I have to protect this. h4. b5. He wants to open up the position, but I will not allow his rook to enter.
Okay. Now bishop here, attacking this and this. Rook here. If I move like king here, then the problem was rook f7 and possible threats of rook h7. That would be very deadly. I think first I'll go with this. He wants to play knight here probably. Then I can just take this. Yeah, I'll go this. Probably knight d3. This move. I think first I'll take this. Then take this. Then probably give a check. And then push the pawn. Now he's just completely winning. I don't know why he's playing this. I think I'll go g4 and then take this. Rook captures. Queen here with the idea of queen h5. Oh, queen h5 does not work because this rook is here. Just take this pawn. तो क्या करेगा गाइस ये गेम तो लॉस हो चुका है इसका. अब तो सिंपली क्वीन भी ले सकता है. किंग अगर इधर आएगा तो रुक चेक और ये क्वीन गया. फाइनली रिजाइन तो किया एटलीस्ट. सीएम किंग क्रशर का टीम फर्स्ट आने के बहुत क्लोज है और मेरा रैंक है 217. अभी भी दूर है. बर्सेक करना पड़ेगा लगता है पर इसमें रिस्की है क्योंकि +2 नहीं मिलता इंक्रीमेंट का. तो आई थिंक हम बर्सेक नहीं करेगा. वो probably d5 खेलेगा. मैं e4 खेलते. अब नाइट कैप्चर, बिशप कैप्चर्स. एंड में मेरे को एक पॉन तो मिल ही जाएगा. नाइट कैप्चर्स और फिर एंड में ये पॉन मेरे को मिल जाएगा.
अब नाइट से ही मारता है, F5, C5 probably. फिर बिशप E3 पे रुक एक्सचेंज और फिर बिशप E7 डेवलप करके। अच्छा एक प्रॉब्लम तो हम देखा ही नहीं कि रुक कैप्चर्स पे हम बिशप E7 नहीं खेल सकते क्योंकि रुक D5 आएगा। तो पहले मेरे को रुक D7 खेलना होगा। किंग कैप्चर्स, फिर रुक से चेक देगा वो, फिर हम किंग C6 खेल सकते हैं। फिर रुक D5 नहीं आ रहा है, रुक D5 आएगा भी तो मेरा किंग प्रोटेक्ट करके रखा है एक्स्ट्रा C5 पॉन पे। अब ये हम कैसे मिस कर रहा है, क्या कर रहा है हम। ठीक है अभी भी एक मूव है मेरे पास, ये पुश। अगर वो ये खेलता है तो हम सिंपली बिशप G7 खेल देगा, आई थिंक हम बच जाएगा फिर। हाँ अजीब लग रहा है पर ये बच जा रहा है। बिशप G7 पे अब वो मारेगा, हम मार देगा बिशप से। अगर बिशप मारेगा तो हम उसका रुक मार देगा। कहीं ना कहीं से निकल तो गया एटलीस्ट। हम ये कंप्लीटली मिस कर गया कि वो बैक रैंक में आ जाएगा रुक लेके। अब मेरा बिशप बहुत अच्छा है इस लॉन्ग डायगोनल पे, बस उसके किंग को एंट्री नहीं दे सकता। क्या करना चाहता है वो, B5 खेल के इसको ओपन अप करेगा। अभी एक्सचेंज करने का मन नहीं, ऑल्दो हम पॉन आप पर मेरे को मन नहीं है क्योंकि उसका किंग कुछ ज्यादा ही जल्दी एंटर कर रहा है मेरे साइड में। मेरे को यहाँ पे B4 खेल के इसके लाइन को ब्रेक करना है ताकि मेरा बिशप से हम इसका पॉन मार दे। अब हम पॉन पुश कर सकते हैं। ये खेलेगा तो हम सिंपली टेक्स, फिर मेरा किंग इधर आएगा और फिर मेरा किंग इधर आएगा और ये पॉन के ऊपर पूरा प्रेशर डाल देगा। बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम्स है उसका। वो शायद एक मूव कहाँ वो ये खेल सकता है। ये कैसा मूव है, हम तो सिंपली मार देगा। मेरा तो पॉन आप है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। अभी तो उसका किंग भी आगे नहीं है। थिंक वो सीरियस मिसकैलकुलेशन कर रहा है अभी। On push, on push, पुश करो खुश रहो। अभी हम बस A5 वेटिंग मूव, जाओ पीछे या फिर साइड में, फिर हम पुश कर देगा। ये खेलोगे तो सिंपली A4 आएगा और फाइनली डिजाइन। चलो आई एम बैक ऑन स्ट्रीक। कितना पॉइंट्स है, 16 पॉइंट्स है स्ट्रीक के साथ, 208 रैंक। दूर है टॉप 10 में आने के लिए 36 तो मिनिमम अभी 10th वाला चल रहा है। 50 मिनट्स है पर टूर्नामेंट भी स्ट्रॉन्ग है तो अच्छा ही है। और CM किंग क्रशर का टीम फाइनली फर्स्ट पोजीशन पे आते हुए VI1 और VL1 I guess।
वर्सैक नहीं करेंगे, अभी रिस्क नहीं लेना है, स्ट्रीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट चला जाएगा तो हम अभी रिस्क लेना नहीं चाहता है। ये भी स्कैंडिनेवियन, अब ये मॉडर्न स्कैंडिनेवियन जाएगा, अच्छा ये क्लासिकल स्कैंडिनेवियन जा रहा है। अच्छा ठीक है, बिशप c4 खेलता है। नाइट इधर, ओके b4 खेलने का मन कर रहा है, ऑल्दो हम a3 के बाद भी b4 खेल सकता है। थिंक a3 खेलता है पहले। b4 c7 आएगा शायद, हाँ बिशप को इधर से डेवलप करता, ऑल्दो बहुत ही अजीब है, यूजुअली बिशप को इधर से कोई नहीं डेवलप करता, नया चीज ट्राई कर रहा इस लाइन में। ये बस मारना है मेरे को। अब ये पॉन भी एक टारगेट है, ऑल्दो अभी हम नहीं मारेगा क्योंकि अभी तो बहुत रिस्की होगा। अभी क्या खेलेगा, इस आइडियाज खत्म हो रहा है। क्या प्लान होना चाहिए मेरा? आई थिंक हम बस डेवलप कर सकते हैं, अभी रुक को डेवलप करता है, उसके मूव के लिए वेट करता है। क्वीन एफ, अच्छा उसको नाइट e5 पे लाना है ना। ये नाइट इधर तो कुछ ज्यादा कर नहीं रहा है, इस नाइट को मैनूवर करना पड़ेगा, और ये c4 पॉन पुश भी करना है मेरे को। ये मूव सोचा था पर इसका आइडिया नहीं है समझ में आ रहा। वो मारना चाहता है तो मार दे, उसका बिशप तो मेरी नाइट से सुपीरियर ही है। c5, अब ये गड़बड़ मूव लग रहा है। नाइट b5 खेलेगा, नाइट इधर खेल रहा है वो। मारेंगे, अब हम f4 खेलना चाहते हैं। f4 f5, f5 अभी तो नहीं काम करेगा क्योंकि उसका e5 खुल जाएगा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि नाइट अभी भी हैंगिंग है, अगर क्वीन हट जाता है तो। थिंक हम अभी नाइट c3 खेल लेता है। d5 स्क्वायर भी कंट्रोल में आ रहा है।
ये मूव खराब मूव लग रहा है। क्या है इसका प्लान? हम ये मार देगा तो मेरे को डबल रुक भी मिल रहा है क्वीन के बदले में, हम ले लेगा। ये एक मूव अब पूरा गेम इसका डिस्ट्रॉय कर दिया। अब F6 का भी ब्लंडर, एक बार में इतना ब्लंडर कोई कैसे कर सकता है? ये तो बहुत ही अजीब है। अब रुक इधर और फिर खत्म। अब क्या ही है ये गेम, मेरे लिए तो अच्छा है एटलीस्ट, पर फिर गेम भी बोरिंग हो गया। क्या है यार, ये डिजाइन भी नहीं कर रहा है ये गेम, अब कोई क्यों खेल रहा है? जल्दी तो खेल दो एटलीस्ट। चेक। चलो रिजाइन नहीं किया, एटलीस्ट मेट तो हो गया जल्दी। 20 पॉइंट्स, अभी बहुत करना है पॉइंट्स। ये क्या हो रहा है? हाँ भी ठीक है। अब हम खेल रहे हैं माइक पेरेवेरेस के साथ। He is from chess FNS team. E4. Again we have the Sicilian and the Smith-Morra gambit. Not accepted. मेरे पास एक cheeky trap है, नाइट कैप्चर्स, किंग कैप्चर्स, क्वीन चेक, और फिर अब ये पिकअप कर लेगा।
को F4 और ये खेलना है। नाइट C4 भी आ रहा है। B3 बिशप को इस लॉन्ग डायगोनल पे लेके आएंगे। ऑल्दो ये भी बिशप ये भी खेल सकता है, पहले इस पॉन पे प्रेशर डाल रहे हैं। लेट्स सी वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। नाइट इधर, फिर नाइट B5 भी आ सकता है, F5 भी आ सकता है और E8 भी जा सकता है। E8 अभी लोग को दिख नहीं रहा होगा किसी को, क्योंकि लोग इसको बस इग्नोर कर देते हैं, पर नाइट E8 चेक भी आ सकता है अभी। अब हम पहले तो ये एलिमिनेट करता है, फिर ये चेक और ये पिकअप कर लेगा। फिर ये चेक भी आ रहा है, बहुत साथ रहता है। फिर C4 खेल के बिशप B2 भी आ जाएगा। अब C4 और फिर बिशप B2 चेक। फिर रुक E1, रुक E6 जैसा मूव आ सकता है। ये तो नहीं काम करने वाला है। क्वीन चेक, क्योंकि हमारे पास C5 भी है, हम इसको बस कंसोलिडेट कर देगा। ये खेलेगा तो नाइट का फिर G4 और फिर ये गया। फाइनली रिजाइन। एटलीस्ट लास्ट वाले की तरह नहीं किया, लास्ट तक खेल रहा, बस ऐसे ही। 24 पॉइंट्स। अभी भी 16 पॉइंट्स दूर है टॉप 10 से। स्किपर फ्रॉम TR चेस। यहाँ पे शायद D5 एक मूव होता है, एक सैक्रिफाइस होता है। अब ये थ्रेट है, अब भी ये थ्रेट को वो कैसे रोकेगा? ये खेलोगे यहाँ पे भी कुछ था, कुछ ओपनिंग प्रॉब्लम है इसमें, कोई याद नहीं आ रहा है। थिंक हम बस नाइट कैप्चर ही मार देते हैं। उसका होल्स तो क्रिएट हो गया बहुत ज्यादा, कुछ प्रॉब्लम्स है। बिशप इधर, अगर C4 खेलते मेरे को नाइट B4 मिल जाएगा, पर नाइट B4 में भी बिशप A3 आ रहा है, तो भी एक प्रॉब्लम है। G5, बिशप A3 खेलना चाहता है प्रॉब्ली। हम रुक F7 खेल सकते हैं। रुक F7 और फिर रुक G7 प्रॉब्ली।
ये खेलेगा तो हम नाइट E7 आएगा, नाइट G6। मेरे को किंग साइड अटैक लॉन्च करना है। ऑन कैप्चर्स, अब नाइट G6, फिर क्वीन E8, E7 नहीं, ये डार्क स्क्वायर बहुत वीक है। क्वीन E8 और फिर इस E3 पॉन के ऊपर हम प्रेशर डाल सकते हैं, और अगर वो क्वीन D2 खेलता है तो फिर मेरे पास नाइट G4 भी है। क्वीन D3, नाइट G4 भी है, पर फिर वो रुक F3 खेलेगा। F4 भी तो खेल सकते हैं, ऑल्दो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है। थिंक हम बिशप E6 खेल के पहले डेवलप करते हैं, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। फिर हम रुक D8 खेलते हैं। अब रुक इधर, अगर वो E4 खेलेगा तो फिर हम F4 पुश कर देगा। अभी हम नाइट E5 खेल सकता है, यस नाइट E5, और फिर ये पॉन चला जा रहा है। अगर पॉन से मारेगा हम रुक से क्वीन मार, फिर ये पॉन मिल जाएगा मेरे को। अभी अब नाइट कैप्चर्स, अब ये बिशप पे अटैक कर रहा है। फिर क्या, नाइट D5 खेल सकता है। हाँ, इसको कंसोलिडेट कर, अगर वो मारेगा हम पॉन से मार देगा, और फिर ये स्क्वायर मेरे कंप्लीट कंट्रोल में आ जाएगा, और नाइट इधर कंसोलिडेटेड बैठा रहेगा C4 पे। फिर ये A4 पॉन भी अभी जा रहा है। वो G5 पॉन मारना चाहता है, वो तो मेरे को समझ में आ रहा है, पर उसको क्या मिल जाएगा अगर तो हम ये मारेगा, वो बिशप से मार भी देगा, फिर हम ये मार देगा D4 पॉन। बस नाइट D2 का ठीक लग रहा है, पहले हम रूक D7 खेल लेता है। इस मूव का लॉजिक नहीं समझ में आया। नाइट D2 खेले तो आई थिंक आई विल बी फाइन।
A6, क्वीन चेक देना है मेरे को, फिर क्वीन से एंटर कर जाना है। पुश, फिर बिशप से चेक का आइडिया है। बिशप चेक और फिर मीट, तो टाइम आउट। अभी 28 पॉइंट्स, 90th रैंक, अभी 14 पॉइंट्स पीछे है, बेसिकली 4 गेम पीछे है, पर ठीक है। हम जेनिथ आरएक्स के साथ खेल रहे हैं फ्रॉम टीआर चेस अगेन। हम बस H5 खेलना चाहता है, पर अभी लगता है काम नहीं करेगा। हम बस सिंपली क्वीन साइड कास्टिंग कर देता, फिर F5 ब्रेक करना है अपन पोजीशन को। नाइट E5, इस पॉइंट पे टारगेट कर रहा है, तो क्वीन E2 खेलेगा प्रॉब्ली। नहीं खेला क्वीन E2, मेरे पास एक अच्छा मूव है। नाइट कैप्चर्स मारता है, वो क्वीन से मारेगा, फिर हम पॉन से मारता है, क्वीन के ऊपर अटैक होगा, फिर हम नाइट भी मार सकते हैं। हाँ, ये पॉन मारेगा तो मेरा बिशप F7 पे आ जाएगा, फिर हम ये मार देगा। ये तो कंप्लीट ब्लंडर था जो खेला। अब हम ये मार देगा सिंपली, फिर नाइट F6 पे आएगा, बिशप चेक आएगा। अगर वो क्वीन F3 का भी ब्लंडर कर देता तो मेरे को एक और क्वीन भी मिल जाएगा। फॉर्चुनेटली नहीं किया। क्वीन से चेक देता है, फिर रुक को लेके आता है दूसरा, बिशप इधर, इसको पिन कर रहा है। किधर जाए, क्वीन E5 चला आता है, नाइट इधर या बिशप इधर खेलता है। ये पिन, वो प्रोबेबली F3 खेलेगा तो हम क्वीन से मार देगा। बिशप D4 तो क्वीन इधर,
हम शायद नाइट रख खेल सकता है। हाँ, रुक से मारेगा, क्वीन से मारेगा, क्वीन से रुक से, और फिर ये पिन रहेगा। अल्टीमेटली तो कुछ नहीं कर पा रहा। So what will he play? I think I'll just go queen e6. He cannot move the rook, and because I'll take the queen. What was that? I will just take this. Then take. Okay, I cannot take this. Then I guess I will just play this. Okay, if I play this, then queen d4 is there. I think I'll just play bishop g6 then. Blocking the rook's file and now preparing c6. Queen here, just exchanging now. Bishop captures. And finally resign. Okay. So 62nd position, 32 points. Still 14 points behind the 10th place. Damn it. I'm playing Ruma X. I have already won one game against Ruma. And this is the French. 2 knights variation. हाँ गाइस, थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया था, बट आई थिंक इट्स फाइन नाउ। क्वीन इधर, तो बहुत स्ट्रगल वाला पोजीशन हो गया मेरा अभी। बहुत ही स्ट्रगल है।
ये क्या किया ये? आई थिंक जो चांस हम सोच रहा था वो मेरे को मिल गया है। पहले क्वीन इधर, अब हम ये और ये दोनों एक साथ थ्रेट कर रहे हैं। हाँ, ये चेक, अभी मार ही देता है यार, जल्दी जल्दी खेलना होगा। इंक्रीमेंट है इसलिए इस बार बच जा रहा है। अभी अब ये चेक का आइडिया, बिशप इधर, मेरा आइडिया रुक को इधर लेके आएगा। क्या करेगा ये अभी? रुक इधर, ओ बिशप इधर आ सकता है, वो कंप्लीटली मिस कर गया, वो भी मिस कर गया। बिशप इधर, ये अब ये पॉन और ये पॉन एक साथ थ्रेट पे है। टूर्नामेंट का टाइम भी कम हो रहा है, जल्दी करना होगा। रुक चेक, ये मारेगा, b4, तो b5 एक ट्रिकी मूव खेल सकता है, सोचेगा कि हम देखेगा नहीं। a4, हाँ फाइनली b5 खेल ही दिया वो। बस पुश करेगा, पुश करेगा, खुश रहेगा। अब तो रिजाइन कर दो यार, कितना और खेलना है इसको। ये खेलते ही जा रहा है। किंग इधर, और ये नाइट ट्रैप नहीं हुआ अभी तक। अब इधर, अब नाइट ट्रैप हो गया। नाइट अगर कभी भी इस स्क्वायर में जाएगा, मेरा रुक बस पिन कर देगा और फिर ये गया। अभी भी ये खेलेगा, वाह हद है। फाइनली डिजाइन तो किया। अब मेरा रैंक है 51, 36 पॉइंट्स। अब 12 पॉइंट पीछे है 10th पोजीशन से। कर तो अभी भी सकता है, पर 16 मिनट ही है। 3 गेम जीतना होगा स्ट्रीक में, एक भी गेम हार नहीं सकता, तभी पॉसिबल है। ब्रूस ली 1940 के अगेंस्ट खेल रहा है। चेक कर रहा है ब्रूस ली, हम भी करे क्या? 1 पॉइंट के लिए रिस्क नहीं लेता, मेरे को अपना स्ट्रीक नहीं गंवाना है। सॉरी मिस्टर ब्रूस ली, मैं वर्सेक नहीं करूंगा। And we have this opening again. Knight f6, h3, castle। जल्दी जल्दी खेलेगा, ये वर्सेक किया, हम इसके वर्सेक का एडवांटेज लेगा फास्ट खेल के, और इसको प्रेशर पे डालेगा टाइम से। मेरे को e5 खेलना है, e5, और फिर अगर वो मारेगा तो फिर ये d5 खुल जाएगा, और फिर मेरे को e6 पुश करना है।
ऑल्दो हम एक इंटरेस्टिंग मूव अभी भी खेल सकता है, उसको सोचने में मजबूर करेगा। बिशप कैप्चर्स। अब अगर हाँ वो रुक से मारता है, पॉन पुश करेगा, वो ये मारा, फिर नाइट क्वीन कैप्चर्स, क्वीन इधर, फिर नाइट G5 एक मूव आएगा, वो प्रॉब्ली नाइट A5 खेल सकता है। नाइट G5, ओके, क्वीन इधर, मेरा आइडिया क्वीन इधर चेक, पॉन कैप्चर्स, फिर भी क्वीन चेक तो मिल ही जाएगा, फिर नाइट चेक, बिशप, बिशप इधर खेलेगा, पहले पॉन टेक्स मार देता है, अब बिशप इधर खेलता है। बिशप चेक, अब अगर वो मारेगा तो चेकमेट। रिजाइंस। चलो ये पॉइंट एटलीस्ट जल्दी मिला, 40 पॉइंट्स, 36 रैंक और 9 पॉइंट्स पीछे है अब टॉप 10 से। अभी भी पॉसिबल है टॉप 10। जिस जीएम एविजनी के साथ ड्रॉ किया था वो 46 पॉइंट्स पे है। मिराबदुल्लेव के साथ खेला और वो बरसेक कर, सॉरी हम बरसेक करने का रिस्क नहीं लेगा। उज़्बेक चेस प्लस, C4 खेलेगा शायद, नहीं खेला। आजकल ये लोग मिस्टेक कम कर रहे हैं C4 वाला। अब मेरा थ्रेट है बिशप H2, H5, G5, एक पॉन सैक कर देता है। अब मेरे को F6 खेलना है, यहाँ पे मेट है, रुक इधर और फिर डबल कर देगा रुक को, रुक इधर, यहां से डबल कर लेगा। बैक रैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वीन बचा के रखा है। क्वीन कैप्चर F3 मार सकता है क्या? अगर वो रुक से चेक देगा, मेरा रुक मार देगा तो हम ये कर सकता है। अभी हम रुक से मार सकता है, वो क्वीन से मारेगा, हम रुक से मारेगा, फिर ये एंड में चला जाएगा। वो रिजाइन कर दिया। $44 पॉइंट्स और 7 पॉइंट्स पीछे अभी भी। हम खेल रहे पोफो वट एवर इज द नेम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ब्लैक ड्रैगन चेस टीम से। फ्रेंच 2 nights again.
ये पॉन चला भी जाएगा तो ठीक है। अपना डबल बिशप को मेंटेन करके रखना है। अब F4 जैसा मूव भी है, पहले हम ये खेलेंगे फिर F4 खेल सकता है। ओ उसके पास F5 भी है, मिस कर गया। ठीक है मैं F4 खेल सकता, अगर F5 तो हम पॉन टेक्स बिशप टेक्स ही मार देगा। पहले चेक और फिर कैप्चर। B4 मेरे को B5 खेलना है ताकि हम ये पॉन उठा पाए। अगर वो क्वीन से मारेगा तो मेरे को उस B5 मिल जाएगा। अब ये पॉन मिल जाएगा, वो नहीं मारेगा तो ये पॉन मिल गया। क्वीन से ये मार सकता है, फिर वो क्या करेगा? अच्छा वो कंप्लीटली ये बिशप G2 मिस कर गया शायद। अब मेरा आइडिया है रुक इधर, वो रुक C1 C8 नहीं आ पा रहा है क्योंकि मेरा बिशप देख रहा है। ये इधर, अगर वो रुक को कभी भी मूव करता है हम रुक से ही सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ऑल्दो अभी नहीं कर सकते क्योंकि बैक रैंक में हम ही मेट हो जाएगा। क्वीन इधर खेलता है, इसके ऊपर अटैक कर रहा है। वो क्वीन से मार नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मेट है, और अगर वो रुक से मेट को पहले मारता है। क्वीन इधर, मेरा आइडिया अब रुक इधर आएगा, वो ये मार रहा है, किंग इधर आ जाएगा। फक, ये मिस कर गया। ये तो बहुत ही घटिया लॉस था, ये नहीं आना चाहिए था। इतना अच्छा स्ट्रीक के बाद ये गेम कैसे हार गया? तब बर्सैक ही करना पड़ेगा, हाथ चेक के अगेंस्ट खेल रहा है।
ये पोजीशन लॉस ही लग रहा है उसका। अब वो नाइट से मार नहीं सकता कि हम क्वीन से क्वीन मार देगा, फिर अगर क्वीन से मारेगा हम रुक से मार देगा। C5, ये भी बच गया, ये पॉन भी कंसोलिडेटेड है। क्वीन C6 और फिर C4 खेलने का प्लान है। रुक इधर, क्वीन से मारने का प्लान है। क्या करेगा वो, रिजाइन ही कर देना चाहिए। क्वीन चेकमेट। अभी भी 7 पॉइंट्स पीछे है, पर सिर्फ 3 मिनट बाकी है। सर्ग के अगेंस्ट में है, जल्दी जल्दी खेलता है। आंख वो सोच रहा है हम ड्रॉ एक्सेप्ट कर लेगा अभी, क्योंकि टाइम कम है। हम नहीं एक्सेप्ट करने वाला, हम तो ये गेम जीतने वाला है।
checkmate. Finally 25th. Although इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं था. Win rate is 78% and average performance is 2432. एक ग्रैंड मास्टर के साथ ड्रॉ, तो उतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं था. और अपने टीम में कौन से पोजीशन में आया? अपनी टीम में 7th आया. ठीक है, नॉट बैड. अब क्या करें? अभी क्या चल रहा है? मंथली क्लासिकल तो बहुत ही लंबा हो जाएगा. डेली रैपिड, I think I can try daily rapid. I'll go with daily rapid. Let's see. अभी शुरू है डेली रैपिड. अभी डेली रैपिड 2 मिनट पहले शुरू हुआ, तो यही बेस्ट है. हाँ. इस टूर्नामेंट में तो फर्स्ट आना है किसी भी तरीके से. और मेरा रेटिंग भी कल रैपिड में बहुत कम हुआ था. आज बढ़ाना होगा उसको. Let's go. Why am I not paired till now? Still not getting any opponents. Well, there are only 195 players here, so that's fairly reasonable. Well, the lichess team battle was pretty good. Okay, finally I get an opponent. I will go Borsec. Opening misclick. Okay, no problem. Let's go for Van Kruji. And the solid opening. Knight here. Just solidifying everything. B3 or Queen B3? Queen B3 will play Queen B6. So I think, or just wait. I think I'll just wait. I want to make a move like G4. So probably after Rook G1, G4 is an idea. Rook here, and now I want to play G4. But first knight F3 because he can capture. And now I guess I'll go G4. Rook captures or knight captures? I think I'll go rook captures. Rook here. As I want to play knight d2. The problem with playing knight d2 now was that there was knight f2 check and he would have taken my rook. क्या खेलेगा ये guys? Now knight d2 and I'll just take this.
That's nice. Now knight here, as I want to exchange this knight. This knight is extremely annoying. And now knight to d2, just exchanging this knight off. And as soon as this knight moves from this square, this f5 pawn will be hanging because this pawn is pinned here. So let's see what he plays. Knight captures d2, bishop captures d2, and if he does not, then I'll just take it. And probably he'll just capture it with the f pawn or d pawn. Wait, rook is the better move. If he captures with the rook, then my position will be blocked. I think I'll just play c4 to open up the position and expand on the queen side maybe. Yeah, now just expand on the queen side. I will not exchange the queen at the moment. a4. I want to play queen d3 and rook c5. Okay. Don't want to exchange the queen yet. But I missed this move. I completely missed this move. It's a disaster. But I have a counter trick. Rook c4. Yeah, now rook c4 is there. He has queen b1 checked, and what? Rook g1 is a move and rook c1 is one move. So what would he play? Okay, I think queen b1 check. I'll go rook g1 and see what he makes of the move. Although I don't want to go for a draw, honestly. But what other choice do I have in this position? I think I'll try rook c1. If he goes queen e4 again, then I have no choice but to accept a draw in this position. Yeah. Oh. I'm playing with Zach
Z8 triple 8 AZ. I'll definitely oversec, and I have to win this game. Okay, he's gifting me a check, then I'll take it. On push. Bishop here, I want to give this check. Bishop check. Although it's a long shot, but my idea is queen here and then this check. Wow. He has castle with the queen. Thank you for that. Queen check. Bishop check. Bishop takes. Knight takes. I think I've got a little too many pieces. I have never had plus 24 in a game. Plus 24 points. Wow. Okay. Nico Faddis. I'll go berserk. Again the French defense and 2 knights attack. Yeah, this is the mainline opening. Nothing much to say about here. I'll just play d4 and open up the position. He will take it and I take it with the knight. If he does not take it, then I'll just push it. And I'm getting a fairly open position as I wanted. He can play e5, but an outpost will be created for my knight on d5. Although the queens would be off the board. Okay, here I can play this move, as this pawn cannot take the bishop, as the rook would be hanging. Oh, I missed it. He can take it, because he would get this extra knight here. That was a tactical mistake which I made. But still it's not that bad, because my position is pretty active. Okay, now what? Think if I give a check, we block it with the knight, then knight b5. I think that should be fine.
He is eyeing for some discount attacks, but where would he get that? I think I'll play f4 here. I want to play e5. Queen b3 just going away from the discovered attack area. And now rook here. Now planning for e5. Or I can just keep the pawns here. It's a good center control that I have in this position. For this move, I'll just move the king away. e5 first and then wanting to play f5. Okay. For this, I guess I'll play queen f3, then g4 and f5. For this h3, still eyeing for g4. He can play a move like h5. He didn't. Then what happens if I play h5? Now g4. He can play bishop e6, wanting to play bishop d5. I'll just move the king here. He can take this pawn. I'll play this. Bishop here, then I'll go e6. Pawn takes, and the threat is queen here. Interesting. I feel that there is something in this position, but I'm unable to spot it. First, I think wait. Don't know, I'm unable to find it. I think I'll just play bishop c1. This is an annoying move. I feel that there is something, but I'm unable to find this move. Find the move.
So what does he play in this position? Queen d6 check is a move. We can just remove his back rank problems with h6, I guess. But I always have a move like bishop captures h6 if he does not play rook captures b2. Because after g captures h6 there is queen f6 check, and I'll just pick up the e6 bishop with my rook. So that is there always. Other than that, what does he play? Yeah, d3 was also a move. Think I'll just play queen e4. Now look here. Bishop f4. Too low on time. Just resign. Terrible loss. The first place player is in 15 points. I think it's not much. Can easily cover it. d4. This time I'll go for the black line attack. It's a pretty fixed structure, so you can basically pre-move all the moves. The idea is h6, g5, knight f8, knight g6, and going for an attack. Oh, he already played h4. I'll still go for knight f8. Rook here. I think I'll play here. Knight captures. If rook captures, I'll play knight f4. And now this g4 pawn is under attack. Queen b6 threatening queen g1.
Knight captures. I have this check, king d2, bishop check, and then I can pick this up. Or I think first I'll go this. And now queen here. It's too much attack for white to block. F6 I guess, and then just takes. It's just bad. I just threw away my winning position. This is pathetic. This is really pathetic. I should have won this game at least. This was completely winning. Guys, by the way, if you want to play against me, you can challenge me on Tactics Forever 2800 lichess ID. I can accept any time controls except for standard time controls. The maximum will be probably 15 plus 10, so any time control is fine except for standard. Yeah, so that is the lichess ID. If you want to challenge, you can challenge in this lichess ID and I'll accept your challenge. Again the 2 knights attack. Bishop g5. This is the main line. Queen a5. Usually people play queen b6, but queen a5 is also okay, I guess. Bishop d3, and then I'll just castle. Oh, I think I just missed this move. Fuck. But I think I can still manage.
bishop d2. Queen here, idea queen e4, threatening meeting ideas. Okay. Queen e4, f5 probably, pawn captures, knight captures, then queen g6, threatening bishop h6. This move, but I'll just take this. I don't know what he is planning. I'll just play queen here. If knight f5, then bishop captures. I'm not interested in this rook. My bishop is very good. Yeah, bishop captures. Knight g5 or bishop g5. These are the two moves that come to my hand. I think I will go bishop g5. Planning moves like bishop f6. If I'm able to eliminate this knight, then that will be very good, because then queen h8 checkmate will be unstoppable. So my idea is rook a d1, sacrifice this rook for this knight, play bishop f6, and the mate will be unstoppable. His plan would be to play rook e8, bring bishop f8, and then bring bishop g7, protecting these moves, as this bishop is the only way to protect against my bishop's ideas. So the question is, who would be faster? Okay, this is getting interesting. Ah, he directly gave away the square. So now what happens if I just play bishop f6? Isn't it just over? Okay, he resigns. What's the rank? It's 34th rank, 7 points. Okay, not far away. Only 13 points behind the first place. Guys, I've given the Telegram group link also. If you guys join that, then you would be updated on if I'm holding any tournaments or team battles where you all can participate.
mem olai. I'll go d5. And I also have the lichess team with the same name of Dark Horse. You can join that as well for more updates. Bishop captures. Queen captures. Now I have to play a6, preventing queen b5 check and queen b7. And then I will capture knight d5. Now knight captures d5. He wants to exchange the queen, but I'm not interested in it. f5, then e5. g6, blocking the check. Then knight here, threatening knight c2. He will probably castle the queen side. I'll play queen a4, threatening checkmate, and queen captures a2. I don't think that there is one move that is defending both queen c2 and queen e2. And now queen captures a2. There is also the threat of bishop a3 check now and mate. And queen captures c2 checkmate is also there. So a lot of threats. I don't think that he can defend those threats. Yeah. Now queen c2 checkmate. Good game. Eighteenth position with 10 points. Still half points out. I'm playing red 034. Berserk. Philidor. I have a move like knight g5. He'll just play knight f6 probably. So I'll wait for him to play knight f6. He still has not played that. Now I want to go for this move. Let's see what happens. Bishop captures, king captures, knight check, then knight here. Should I play queen d3 and queen c4 check first? Or it would be a wasted move. Okay, queen d3, then he has knight b6. Then what? And my whole plan would fail. So I'll just play knight e6. Now just castle. Knight to f8. Think I'll capture and then play f4. Although I am a piece down, I think I have enough compensation for the piece. Because his king is misplaced, then all my pieces I've castled and more or less my development is complete. I just need to open my rook's file and then I think it would be fine. Captures and then move. Okay, he's getting this bishop g4 with a tempo.
I think he made a mistake. If he captures with the queen now, I have this queen check, I think. But then queen e8 is also there. I think still I'll play this check. Queen e8. Now queen c7. Idea of e5. And now just push e5. If he plays a move like knight d5, I have queen captures c6. Oh, queen captures c6 is not working. Wait. His queen is there. What am I doing? Okay. Rook f3 with the idea of rook g3 and also doubling the rooks on the f5. Queen d7. I have an interesting move. I think I'll just play this. I'll give away my queen and threatening rook f8 checkmate. Now what? I think I have the move. Rook check, king here, rook check, then rook check, and then capture the queen, and I'll gain the exchange at the end of the position. And now rook captures rook. Now an exchange up, and I think I should win this position without much trouble. Rook here, then capturing this pawn.
Just gave this pawn for free. I didn't see that, honestly. I have to be careful here. I think I have just messed up the position a lot. I just threw away a simple win to this position. This is terrible. He would be very happy not resigning in this position earlier. What a turn of events. First, I gave up the piece, and now I'm exchange up, and then again, somehow he has got some position, although it's still winning for me, but still he has gotten his hope back. Just because of this one pawn. And now my rook can move. Earlier my rook was unable to move because he could have pushed a3, and now my rook can move because my king is blocking this a3 pawn move. So what would he play? What exactly would be his plan in this position? A move like bishop c4 will be dealt with rook c5 check. He has to go king f6 to protect this pawn. Then I can just take this bishop and push the pawn and wait. Okay, he'll still be in this box with his king, so I cannot do that. But still, after bishop c4, rook check and king f6, I think I can also go king a3, just waiting. This move I will just play this check. King here.
A move like this, I think I'll just play this. Okay, he has this. But still I think I'll just go rook here. King probably here. King, he did not play that. I'll just play rook check. He has to go king here, otherwise I'll just capture this pawn. And then g3. Blocking this pawn completely and planning moves like rook f4, and your rook d6 is also there. Okay, I have to be faster. Oh, I didn't think that I would be able to win that game. What a turn of fate. My goodness. Okay, happy Santa. I think I have to play more seriously from now onwards. Otherwise, the same things will happen again, like it happened in this game. If he takes, I'll take the. Acha, he blundered the mate. That's good for me. $10 points behind the first place player. Reza 1968. I think I'll go sec.
If queen captures, then again a6, and then capture the d5 pawn. Knight captures d5. I wonder why people play d3, a move like d3. Why not knight f3 and d4? d3 is extremely passive. It blocks the queen's vision also. Although it prepares c4, but this will become a backward pawn. It's not like he can castle queenside here, because this a2 pawn will be hanging. e5, and now I'll just consolidate my e pawn with f6, and then I have ideas like g5, h5 flowing in this position. Now f6 as planned. My bishop would probably come to d6, as when this e pawn moves, I want this bishop in this long diagonal. And now I have ideas like g5. This knight would probably be happier on this f4 square, so I have to maneuver it via knight e7, g6 and f4 probably, if that is not too slow. g5 first. He wants this f5 square. I think I can play f5 myself. He will play queen f3, probably trying to exchange off the queens, and I'll go queen f7. Eyeing for moves like g4. g4. If he takes my bishop, I'll take it with the pawn, solidifying the e pawn more. Although I think he should have played queen e2 and pressurized this pawn more. He does not have moves like queen a7, only queen b6. I don't think that queen b6 is threatening enough for me to consider it. Play f4 with ideas of f3. First rook g8, and then I'll play f3. Because direct f3, he would take this pawn on g4 and check, and then capture on f3. I think I can play d5 also in this position. That would be extremely good. d5, as he cannot capture this pawn with the queen, knight is supporting, and then e4. Now e4. The best move was queen f1 in this position, because now I have this move f3, and if he plays g3, my idea is queen h5 and queen h3. How is he planning to defend the g2 mate? क्या करेगा ये गाइस? क्या आपके पास कोई प्लान है? मुझे तो कोई मूव नहीं दिख रहा. ये बस ऐसे ही कर सकता है कि रिजेक्ट कर दे इस ऑफर को, बट देन हम अगर पॉन कैप्चर्स मारेगा, फिर भी वो मार नहीं सकता. अगर वो मारेगा देन मेरे को फाइल मिल जाएगा. So I think he should reject this. पर क्वीन g6 खेल के इसका आइडिया भी क्या है? इसको शायद क्वीन h4 पे आना है.
थिंक हम मार ही देता है। तो प्रोबेबली अभी क्वीन h4 खेल देगा, तो किंग कैप्चर्स अगर मारेगा तो मेरे को ऐसे भी f5 मिल ही रहा है पूरा। बहुत प्रॉब्लम्स होगा उसके लाइफ में। अब अगर हम क्वीन रुक इधर खेलता है तो प्रॉब्लम ये है, अगर वो सोच रहा है कि वो अच्छा वो बिशप इधर खेल सकता था, पर अगर वो ये क्वीन h4 खेलता है, मेरे पास ये g3 मूव है, इंटरमीडिएट मूव। अब वो क्वीन से तो मार नहीं सकता, अगर वो किसी भी पॉन से मारता है ये f2 पॉन तो चला ही जाएगा एंड में। अभी f2 पॉन चला गया, फिर हम यहाँ पे चेकमेट दे देगा क्वीन बना के। अभी क्वीन बनाया चेक, फिर नेक्स्ट मूव में क्वीन से चेकमेट। $25 पॉइंट्स, अभी भी 6 पॉइंट्स पीछे है फर्स्ट प्लेस प्लेयर से। ज्यादा दूर नहीं है, बहुत टाइम है, आराम से पहुंच जाएगा। 2150, एटलीस्ट 2200 तक तो लेके जाना है। रैपिड का रेटिंग बहुत गिर गया, 200 पॉइंट्स गिर गया है पाप, 200 या 150 पॉइंट्स अराउंड। ओके, वापस निको फेडिस के साथ खेल रहा है, इस बार बदला पूरा करेगा। ये 4th प्लेस पे है, दोनों ही स्ट्रीक पे है, ये गेम तो जीतना ही होगा। e4 e5 वापस, बिशप c4, कौन सा लाइन खेलता है देखते हैं। बिशप c5 हम कैसल करेगा। लेट्स सी, d6 या नाइट f6, क्या खेलता है ये। Knight f6 and now we go for the max lang attack. बिशप से मारा, अब हम नाइट से मारते हैं। फिर यहाँ बिशप g5 पे आएगा, बिशप g5। देखते हैं, अभी बहुत सारा मूव है। बहुत लोग यहाँ पे h6 खेलते हैं, बहुत लोग d6 खेलते हैं, बहुत लोग क्वीन e7 खेलते हैं, बहुत लोग कैसल कर लेते हैं। h6 चूज किया इसने, बिशप h4। अब यहाँ पे ये क्या खेलता है, g5 या फिर नाइट e6 या फिर क्वीन e7। क्वीन e7 चूज किया है। अभी f4 के मूव से प्रॉब्लम है कि उसका आइडिया है कि वो क्वीन c5 खेलना चाहता है। बट आई थिंक हम अलाउ कर सकते हैं, हम f4 ही खेलता है। क्वीन c5 खेलो। ओ नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। देखते हैं अभी भी, अगर हम ये टेक्स करता है तो क्या करता है। द थिंग इज, वो नाइट c2 अगर चेक देता है, हम किंग हटाएगा, उसको ये तो मिल जाएगा, पर इसके पास इसके ऊपर अटैक भी बहुत होगा। वो नाइट f3 चेक दिया, हम किंग हटाएगा। अब क्या, अब हम अगर मारेगा, उसका प्लान है कि वो मेरा ये बिशप मार सकता है। हम ही मार देता है पॉन। वो किंग से मारेगा, हम पॉन से मारेंगे।
नाइट c3, मेरा आइडिया नाइट d5 पे और फिर f6 पॉन पे टारगेट करना है। वो ब्लॉक कर रहा है उसको। क्वीन g4, आइडिया क्वीन से मारेंगे। ये थोड़ा स्लो हो गया, मेरे को क्वीन g4 की जगह कुछ और खेलना चाहिए था। अब वो d6 भी खेल सकता है, वो रुक g8 भी खेल सकता है, इस पॉन पे प्रेशर डालना है। क्या खेलेगा? नाइट g6 भी एक मूव है। यहाँ पे तो g3 खेल देगा। नाइट g6 पे रुक f5 आएगा मेरा, फिर हम रुक को डबल कर लेगा f5 पे। ये क्या मूव है? हम अगर मारेगा तो क्या होगा? वो शायद बिशप h3 के लिए सोच रहा है, पर हम फिर रुक g1 खेल देगा। क्या प्लान है एग्जैक्टली? आई थिंक ब्लंडर तो नहीं कर दिया ये। मार के ही देखते हैं क्या करता है, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। बिशप अगर, अच्छा वो ये खेला, शायद ब्लंडर ही था उसका। अभी हम रुक g1 खेल के बस एक्सचेंज कर लेता है रुक्स को, काम हो गया फिर। रुक f1, d5, आई गेस हम क्वीन f3 ही खेलेंगे। उसके पहले एक बार ये मार देता है। अगर ये मार देता तो प्रॉब्लम बहुत होता, क्योंकि बिशप d5 आ रहा था। इनका भी बस क्वीन कैप्चर्स मार दे क्या? थिंक हम एक्सचेंज ही ऑफर करता है रुक्स का, तो ज्यादा बेहतर है।
हाँ ये लॉस ही हो गया, थिंक को रिजाइन कर। आई थिंक हम अभी स्ट्रीम को बंद करता है, फिर अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आई गेस ब्लिट्स तक ठीक था, फिर कल वापस आएंगे।